entry point of the image, last step when build docker file. आपने इमेज बनाई, उसके बाद उसका आर्गुमेंट ओवरराइड करना है तो आप cmd से कर सकते हैं। इमेज बनाई, उसके बाद जब हम डॉकर फाइल से डॉकर इमेज बनाई, उसके बाद उसका आर्गुमेंट ओवरराइड करना है तो आप cmd कमांड का व्हेन आर्गुमेंट ओवरराइड करना है तो आप cmd इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। ओके, डॉकर वॉल्यूम मेन होस्ट सर्वर के अंदर कंटेनर का डेटा परसिस्ट सेव करना है विद द हेल्प ऑफ डॉकर वॉल्यूम। मेंटेन होस्ट सर्वर के अंदर कंटेनर का डेटा परसिस्ट करना है। जो मेन सर्वर है, मेन जो सर्वर है उसके अंदर आपका डेटा परसिस्ट करना है तो विद द हेल्प ऑफ डॉकर वॉल्यूम वी कैन persist the docker, okay, volume inside the container. Okay, docker volume create nodes volumes. Docker volume create a nodes volume. Docker inspect nodes volume, finding out volume location in your host machine. Finding out the volume locations in your host machine. डॉकर वॉल्यूम एल जो कि हम क्या कर से एल कमांड हमको डॉकर का जो वॉल्यूम है वो शो करती है, शो वॉल्यूम ऑफ डॉकर। ओके, डॉकर रन हाइफन वी, जो एग्जैक्टली डॉकर रन हाइफन वी start a poll. What is cloud computing? What is cloud computing? Cloud computing. Arish. Exactly, cloud computing. Okay, Docker network. No, network, different type of Docker networks. No, no, any networks without any IP addresses. Cloud computing. Arshi. What is Arshi? डॉकर नेटवर्क कम्युनिकेशन टू ईच अदर। ओके, डॉकर नेटवर्क क्या करता है एग्जैक्टली, जो कंटेनर्स होते हैं, ओके, दे आर कम्युनिकेट टू ईच अदर। ओके, देर आर 1 2 3 4 5 टाइप्स ऑफ डॉकर नेटवर्क। जो फर्स्ट इज नथिंग बट द दैट इज अ okay, no, none network. Second is a host network, and third is nothing but the bridge network. What is exactly bridge network? The communication between the container, जो दो कंटेनर होते हैं उसके अंदर कम्युनिकेट करने के लिए डॉकर ब्रिज नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। ओके, होस्ट इज नथिंग बट द कम्युनिकेशन विथ होस्ट मशीन सिस्टम। इनसाइड दैट वी आर यूजिंग host network, bridge, communication between two container, and user defined bridge name करो। ओके, वी क्रिएट यूज़र डिफाइन ब्रिज। जो नेटवर्क हम खुद से बनाते हैं उसको हम यूज़र डिफाइन ब्रिज नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। और जो फिफ्थ नेटवर्क है मैक विलैन नेटवर्क्स, IP विलैन। ओके, there are 6 type of the docker network inside docker. Okay, docker, your name, my name is Ashok Bhosle. मैं पुणे में रहता हूँ। अर्श प्रियंका, हेलो भाई। cmd commands, the entry point of image, last step when build docker file.
जब हम डॉकर फाइल बनाते हैं, सो इन दिस केस वी पास दैट पर्टिकुलर आर्गुमेंट। आर्गुमेंट हमको ओवरराइड करना है तो हम cmd कमांड्स और जो इंस्ट्रक्शन होता है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। डॉकर नेटवर्क क्रिएट डॉकर नेम। जब हम डॉकर नेटवर्क क्रिएट करना है तो इन दिस केस हम क्या करते हैं, डॉकर नेटवर्क क्रिएट कमांड यूज़ करते हैं और जो डॉकर नेटवर्क है उसका नाम लिखते हैं वहाँ पे डॉकर नेटवर्क एलएस। जो हमें डॉकर नेटवर्क देखना है तो इन दिस केस वी आर यूज डॉकर नेटवर्क एलएस। एलएस कमांड्स मेनली यूज्ड फॉर like as the display the docker networks inside our machines, okay, that is docker network. डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट नेटवर्क इज़ ब्रिज नेटवर्क। जब हम डॉकर कंटेनर के अंदर कोई नेटवर्क बनाते हैं तो उसके जो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क है वो कौन सा होता है नेटवर्क, वो डिफ़ॉल्ट ब्रिज नेटवर्क होता है, ठीक है। दैट इज डॉकर कंपोज्ड। ओके ओके ओके। Docker Compose. It's a way to orchestrate Docker Compose. Exactly what is a Docker? It's a way to orchestrate multiple Docker containers. It's a way to orchestrate multiple Docker containers. That's we are used like as creating a Docker container, managing multiple container. So we are used a Docker Compose for that. Docker Compose up -d। जब जब डॉकर कंपोज की फाइल लिखते हैं उसके बाद उसको हमें रन करना है तो हम डॉकर कंपोज अब -d का यूज़ करके हम उसे रन कर सकते हैं, ठीक है। डॉकर नेटवर्क -d, ओके। एंड आफ्टर दैट डॉकर कंपोज डाउन। जब हमको डॉकर कंटेनर डाउन करना है तो डॉकर कंपोज डाउन कमांड्स वी आर यूज्ड। -d इज यूज्ड फॉर like the background service detached mode we are using -d for detached mode, okay। docker init, docker desktop install for ubuntu on their official site, okay। docker के ऑफिशियल साइट्स पे हम डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल कर सकते हैं। डॉकर इनिट से टूल्स फॉर क्रिएट अ डॉकर फाइल। automatically we create a docker file by using a docker init commands। माय नेम इज अर्शी रजक। ओके, कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से हो क्या आप? व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? ओके, कहाँ, कौन से स्टेट में आता है वो? अर्शी, ओके। ये आप क्वेश्चन दिख रहा है क्या? यहाँ पे मैंने एक मार्क किया है, देखो, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, जो मार्क किया है यहाँ पे, तो आपको दिख रहा है क्या? व्हाट्स योर फोन नंबर? UKG। भाई फ़ोन नंबर क्यों चाहिए भाई? UKG क्या है UKG? डॉकर इनिट एक क्या है, जो ऑटोमेशन टूल्स है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली डॉकर फाइल है लिख सकते हैं। डॉकर इनिट एक टूल है, ओके।
Docker init is a one type of tool that's class. Are you gamer? Yeah, I am also gamer bro. मैं गेमर भी हूँ, स्टडी भी करता हूँ, बीजीएमआई खेलता हूँ मैं, लेकिन अभी फिलहाल तो स्टडी कर रहा. Just run commands on docker init. Okay, what with the help of docker init we create docker ignore docker file docker compose.yaml readme docker md. Okay, select our application language, select our application language, which language. Okay, readme, version of language, okay, port, command of for your application run. Okay, your docker file is ready. जब हम डॉकर फाइल बनाते हैं तो डॉकर फाइल बनाने के बाद हम उसको रन के लिए डॉकर बिल्ड हाइफन एफ डॉकर फाइल नेम, और उसके बाद डॉकर फाइल नेम डालने के बाद हम क्या करते, लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डॉकर फाइल, एंड आफ्टर दैट वी कैन रन दैट पर्टिकुलर डॉकर फाइल. ओके, हम डॉकर फाइल से डॉकर इमेज बनाते हैं, डॉकर इमेज बनाने के बाद हम डॉकर कंटेनर बनाते हैं, और डॉकर कंटेनर बनाने के बाद हम उसे होस्ट करते हैं. तो host with the help of the private IP of that particular server, and we can use the like a CIDR or a port number, and after that we can host that particular applications by using a docker container. So first of all we need to create a docker files. Docker file create करनी पड़ती है. तो docker file create करने के लिए हमें different type of instruction हम इसके अंदर लिखते हैं. उसमें से एक जो इंस्ट्रक्शन होता है वो होता है फ्रॉम, जो कि हम क्या डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन करते हैं, क्या डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन करते हैं फ्रॉम से हम एग्जैक्टली ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स वर्जन. ऑपरेटिंग सिस्टम और उसका जो वर्जन है हम फ्रॉम इंस्ट्रक्शन से डिफाइन करते हैं, और उसके बाद रन होता है, जिसके बाद हमें कौन सी भी लिनक्स की कमांड रन करनी है तो हम रन कमांड इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके हम वो कमांड रन कर सकते हैं. और जो नेक्स्ट है उसके बाद थर्ड इंस्ट्रक्शन है जो कि कॉपी इंस्ट्रक्शन से हम लोकल मशीन टू होस्ट मशीन में कंटेनर के अंदर हम कौन सी फाइल या फोल्डर हम कॉपी कर सकते हैं. ऐड से हम क्या करते हैं कर सकते हैं, लोकल से रिमोट में हम कॉपी भी कर सकते हैं, और ब्राउज़र से हम क्या कर सकते हैं, कुछ डाउनलोड करने का है हमको तो हम वो डाउनलोड भी कर सकते हैं. किससे, जो ऐड इंस्ट्रक्शन है. तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज एग्जैक्टली डिफरेंस बिटवीन द कॉपी एंड ऐड कमांड. वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र. some gamer. You are gamer. Select our applications. कौन से क्लास में हो भाई तुम? गेमर 5.0. Yes, I am a gamer. भाई कौन सा गेम खेलते हो आप? ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, दिख रहा है वो आपको? दिख रहा है क्या?
1 मिनट में दिखाता हूँ आपको। बैचलर्स, भाई हम बैचलर्स में रहते, बैचलर्स है पूरे हम। मैं रूम दिखाता, 1 मिनट। देखो यहाँ पूरी स्टडी टेबल है, देखो ये मेरा फ्रेंड का है, ठीक है। ये हमारी रूम है। कहाँ से हो आप? कहाँ से हो आप? कैटराना, व्हाट इज कैटराना? मेरा इंटरव्यू है भाई, इंटरव्यू। टेंशन आ रहा। डॉकर इमेज सिक्योरिटी, डॉकर इमेज सिक्योरिटी के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? तो डॉकर ट्रीवी, जो आई एम फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर भाई। ओ क्या एक, ओ, समय समय पता है क्या आपको? समय खतरनाक बोलता है, कश्मीर से ही हो। Docker image security scanning. For the scanning purpose, we are use the Trevi tools for the scanning of Docker image. When we scan the image, so at that time they are checking what is exactly issue inside a Docker image. Okay, Docker Scout. Okay, Docker Scout image sorry टूल्स है, जिससे हम क्या करते हैं, कॉमन वॉलंटरीज और एक्सपोज। ओके, इमेज डॉकर स्काउट कमांड्स यूज करने से पहले डॉकर हब में लॉग इन करना होना पड़ता है, देन यूज द कमांड्स। ओके, डॉकर स्काउट कमांड यूज़ करने से पहले डॉकर हब में लॉगिन करना। जब हम डॉकर स्काउट यूज़ करते हैं तो उसके पहले हमें डॉकर हब में लॉगिन करना पड़ता है, उसके बाद हम ओके डॉकर स्काउट टूल्स यूज़ कर सकते हैं। ओह ओके ओके ओके। ओके, ये यहाँ पे क्वेश्चन ऐड कर सकते हो और स्टार्ट। ओके आंसर, ये कैसे एडिट करते रे भाई? स्टार्ट पोल, गेम फ्रॉम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र। ये दिख रहा है क्या? यस नो यस नो यस नो दिख रहा है क्या? यस नो। ये बंद कैसे कर दे रहे भाई? ऐड इसको सेटिंग के अंदर, टॉप मैसेजेस, टॉप मैसेजेस। ओके, इसका आंसर ये कैसे निकालना है? डेट इंड, ओके इंड करना है यहाँ पे, ऐसा करना है। व्हाट इज डॉकर? DOCKER, डॉकर, डॉकर डन। आंसर appear chat message। अरे भाई ये कैसे एडजस्ट करूँ?
adjusting our hmm. I am 8 years old. वाह भाई वाह, गुड ब्रो गुड। कौन सा स्टैंडर्ड में हो फिर? यूकेजी, एलकेजी, फर्स्ट सेकंड? डॉकर इमेज, डॉकर स्काउट कमांड्स यूज करने से पहले डॉकर हब में लॉगिन करना पड़ता है। देन यूज द कमांड्स मल्टी स्टेज डॉकर बिल्ड। ओके, व्हाट इज मल्टी स्टेज डॉकर बिल्ड? फ्रॉम बेस इमेज स्टेज 1, स्टेज 2, ओके, स्टेज 3। जैसे हम क्या करते हैं, पहले जो होता है फ्रॉम द बेस इमेज एस फिल्टर, स्टेज 2 फ्रॉम स्मॉल बेस इमेज, ओके, अप टू अगेन वी आर यूज अ स्मॉल बेस इमेज। Docker stop image. Docker interview questions and answer. What is a Docker? Docker container difference. How a Docker container difference from the virtual machines? Okay. Limit of container in a Docker. No any limits for a Docker container. It depends on a machine system. In our system is not enough CPU memory at that time we are not run container. Okay, creating a number of container in one node, but that container has a different CPU memory. So how handle this? Pass argument when creating a container like CPU memory, okay, CPU 2 and memory 1, okay, hyphen hyphen CPU, okay, creating a number of container in one node, but that container has a different CPU memory. So how you handle this? First of all, we can pass the argument. Sorry, I am 9 years old and I am in fourth. Okay, good bro, good। बीजीएमआई खेलती हो क्या? सो वी पास द आर्गूमेंट। जब हम आर्गूमेंट पास करते हैं, जब हम कंटेनर क्रिएट करते समय ही आर्गूमेंट पास करते हैं। सो कैसे जो आर्गूमेंट होते हैं, हाइफन हाइफन CPU 1 स्पेस 2 एंड आफ्टर दैट हाइफन हाइफन मेमरी 1 स्पेस 1, sorry, 1 gigabyte. So in this case we are user passing the argument and after that we creating a container. So in this we handle that particular situations. Okay, we want a different type different CPUs as well as different types of the memory. So in this case we are used the arguments like as hyphen hyphen CPU and hyphen hyphen memory for the creating a container inside a Docker file. Okay, what is a Docker file? What is exactly Docker file? The Docker file is nothing but the inside the Docker file we creating Docker images by using a Docker files, and after that we creating a container from that particular Docker file. Okay, that is a called as Docker file. And Docker file is nothing but that it is a set of instruction that's we are used we creating images from that particular Docker file. Okay, that is a Docker file. What is a Docker instruction? Okay, so Docker's instruction is nothing but it is one types of commands that helps to creating a Docker images from a Docker file. That is a instruction inside a Docker. There are Docker instructions. Okay, there are different types of the instructions, different instruction inside a Docker file. There are like run, from, work dir, cmd, add. Okay, there are different types of instruction inside a Docker file. What is the purpose of cmd? What is exactly purpose of the cmd? Okay, we creating a container, and inside that container we want to some
like we want some access a server. Okay, so in this case we are using a Docker CMD for accessing some software we want to we creating. Okay, one container, inside the container we run the any application we want to run, that particular application or host that particular application. So in this case we are used a CMD for when you creating a container, and inside that what we want to run. So in this case we are used a Docker's okay CMD instruction, different from CMD and entry point. What is a difference between the CMD and entry point? Are you playing फ्री फायर? नहीं, मैं नहीं खेलता यार फ्री फायर, मेरे को खेलना नहीं आता। मैंने को ट्राई किया था लेकिन नहीं, मेरे को वो जमता ही नहीं। स्टार मतलब फ्री फायर खेला था मैंने 2-3 बार, लेकिन मेरे को जमता नहीं, इसलिए नहीं खेलता मैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ CMD and what is the difference between the CMD and entry point? हाउ स्केल कंटेनर हॉरिजॉन्टली? जो हमने एक कंटेनर बनाया तो हम उसको स्केल कैसे कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली? तो हॉरिजॉन्टली इज नथिंग द रनिंग मल्टीपल कंटेनर हॉरिजॉन्टली यूजिंग अ डॉकर स्वार्म और कुबरनेटिस। हम क्या कर सकते हैं कि डॉकर कंटेनर का हम रेप्लिका बनाते हैं। ठीक है, कौन से क्लास में हूँ भाई? मेरी डिग्री ख़त्म हो गई है, अभी मैं फ़िलहाल जॉब देख रहा हूँ। बी किए मैंने, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस। देखो मैं आपको दिखाता, मैंने ए डॉकर जो है यहाँ पे, मतलब वो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आता है, इंजीनियरिंग के बाद होता है, तो उसका मैंने कोर्स किया है, उसका पढ़ रहा मैं। से हो के सामने मेरे महबूबा। बीटेक बोलते, बीटेक बी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, एमटेक मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, एमटेक। एमटेकचा मीनिंग काय असते पाहिजे? मास्टर ऑफ टेक्नॉलॉजी। कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? क्लाउड कंप्यूटिंग जिसमें लिनक्स आता है, लिनक्स, और उसके बाद जो नेक्स्ट है लिनक्स आता है, AWS आता है, जो अमेजोन वेब सर्विस है वो आता है, उसके बाद होता है डेवऑप्स। एग्जैक्टली जब हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं लिनक्स से, तो लिनक्स स्टार्ट करते हैं, जो लिनक्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स की कमांड्स होती है, जो यूज़र मैनेजमेंट, हम लिनक्स पता है कि जैसे विंडोज़ होती है उस टाइप की लिनक्स होती है। तो क्या करते हैं, वो CLI टाइप होती है, मतलब ये ब्लैक स्क्रीन होती है, उसके अंदर हमें इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, उसके अंदर ओके सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम ज़्यादातर लिनक्स यूज़ करते हैं। और उसके बाद AWS होता है, जो कि अमेजोन वेब सर्विस होती है। जैसे एक समझो एक लैपटॉप है, ठीक है, तो लैपटॉप जैसे हम एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो AWS के अंदर हम मल्टीपल बना सकते हैं, कितने भी बना सकते हैं। द हेल्प ऑफ जो AWS होता है, अमेजोन वेब सर्विस, जो एक क्लाउड प्रोवाइडर है, जो जैसा गूगल ड्राइव होता है कि उसी टाइप का होता है वो, जिससे हम मल्टीपल कंप्यूटर्स बना सकते हैं एट अ टाइम, वो AWS के अंदर आता है। और उसके बाद होते हैं डेवऑप्स होता है, जो कि उसके अंदर मल्टीपल टूल्स होते हैं डेवऑप्स के अंदर, विद द हेल्प ऑफ उसके हेल्प करके हम उसको मैनेज कर सकते हैं, जो हमने AWS में किया है उसको मैनेज कर सकते हैं। जरा तस्वीर से वो के सामने। Linux I know for the stability, security and flexibility
Okay, it's open source. Okay, often used combination with the other software to form a complete operating system. The software is distributed under GNU. Yes, yes. क्या करते हो आप? आपको लिनक्स का नॉलेज है शायद. से हो निकल के आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? प्रिपेयरिंग GW मीन्स या 12th में हूँ अभी. ओके 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 ओके. GW एडवांस कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो. या गुड. मैं भी ट्राई किया था, मेरा नहीं हो पाया. अभी मैं फिलहाल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मतलब हो गई मेरी इंजीनियरिंग. भाई GW क्रैक हो गई ना भाई तेरी. तेरे बल्ले बल्ले फिर. करता हूँ मैं, नहीं तो मैं उसके चक्कर में मेरा भूल जाऊंगा. व्हाट इज डॉकर इंस्ट्रक्शंस? एग्जैक्टली डॉकर इंस्ट्रक्शंस. ये तो हो गया. हाउ टू हॉरिजॉन्टली. इंजीनियरिंग से अच्छा है IPS IAS. अरे भाई नहीं नहीं नहीं, तेरे को बता देता मैं भाई, इंजीनियरिंग बहुत बढ़िया है. तेरे को पता है क्या IT में कितना का पैकेज मिलता है? 50-50 लाख का पैकेज मिलता है, लेकिन बंदा अच्छा होना चाहिए, स्टडी करने वाला होना चाहिए. भाई 50 लाख के ऊपर पैकेज है भाई. अच्छा तूने पूरा ऑल किया, तेरे को लैंग्वेज आती है, तेरे को सर्वर का काम आता है पूरा, तेरे को एक्स्ट्रा टेस्टिंग का नॉलेज है, तो तू भाई 50 लाख का पैकेज मिल सकता है भाई. टी बॉम्बे. अशोक बोल भाई. प्रथमेश हॅपी बर्थडे म्हणतो. कोणाचा हॅपी बर्थडे? अरे गाजर चालू बनवायचं. हा माहिती माहिती. बनवायचं का? माहिती काय? माहिती रे, गाजर बनवायला माहिती. बनवायचं. गाजर का हलवा पता है क्या भाई तुमको? हे काय फालतूपणा करतोय? फालतूपना नहीं है. दांत घसना है क्या तुमको? दांत इसको बोलते हैं दांत. ये IT में जॉब करता है भाई. इसको पेस्ट बोलते हैं. कोलगेट का पेस्ट है, 10 रुपए का प्रथमेश लाता है, हर दिन में यूज करता है. आज नहीं का गया ऑफिस सुट्टी लिए. कोण आहे हे? किती लोक आहे? 33 लोक आहे. हे 2च लोक आहे ना वे डांके. 2 लोक नाही लय आलते भरपूर सारे. तुमच्या जवळ गर्लफ्रेंड असेल तर मला कॉन्टॅक्ट करून. लाईव्ह चालू आहे पागल. कोणी बघ. चल करू. ए गाजर चालू करायचं का? काय आज काय कुठून गोड निघलं तुझं? करायचं का ते सांग. बनवत ना. हा मग आता तुझा अभ्यास भरपूर पण झाला असेल. आता कसलाय तुम्ही? प्रथमेशला म्हण ना. प्रथमेश काय आज म्हणतो? नाही म्हणणार प्रथमेश. तुला खाणार नाही झालं. तो नाही खाणार, आपण दोघं खाऊ. हु इज ही? चालेल. हु इज ही म्हणते ते. हु इज ही? हु इज ही? अरे भाई ये मेरा सीनियर है, मेरे कॉलेज में मेरा सीनियर था 2 साल ऊपर. अभी वो जॉब कर रहा है, सर्वर इंजीनियर है वो. हाउ यू डिबेट दिस इशू? डिबग. ओके डिबग. सॉरी. Using docker logs commands, go into docker exe and see what is error, and also docker inspect. ओके docker inspect से हम क्या कर सकते हैं कि docker कंटेनर के अंदर जा सकते हैं. उसके बाद हम docker image inspect. ओके docker inspect कर, उसके अंदर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो हम docker inspect इंस्ट्रक्शन ये कमांड से हम
कर सकते हैं। लाइक एज डॉकर को डिलीट करना है, डॉकर कंटेनर को हमें स्टॉप करना है, सो इन दिस केस वी आर यूज डॉकर इंस्पेक्ट कमांड फॉर दैट पर्पस। ओके, फास्टर बिल्ड इमेज एंड स्मॉलर इमेज साइज। ओके, फास्टर बिल्ड इमेज को बिल्ड करना है फास्टली एंड स्मॉलर इमेज साइज। जो हमें बिल्ड, ओके, इमेज को बिल्ड करना है फास्टली, सो स्मॉलेस्ट इमेज इज अल्पाइन in a docker container. What is a smaller image? The alpine is a smaller docker image. Okay, and image size, multi-stage strategy we are used for get the smaller image काय? size. त्या पोरांना फोन करून दे, 10 तारखेला खाली करा म्हणून. 10 तारखेला नवीन माणसं शिफ्ट करू राहिले. यू आर मरीन इंजिनियर. कोण त्यांना खाली करायला सांगायचं का? नवीन लोक शिफ्ट होतात. जरा बाप, नवीन लोक शिफ्ट होते. का का म्हणजे का यायचं का कुठं तिकडं तिकडं कुठं? नाश्ताला? नाही आम्ही नाही नाही आलो. पैसेच नाही जवळ. गाजरचा हलवा तरी करायला घेऊन येऊ ना. गाजर बिजर घेऊन येऊ ना. दूध आणि गाजर, 1 किलो गाजर आणि 1 किलो दूध, दोघं पुरतं. भाऊ माझ्यापाशी काहीच नाही सिरियसली. नको खाऊ ना. 20 रुपयाची 1 प्लेट भेटते ती कोण पण त्याला नाही खायचं काहीच का? विल यू बी माय फ्रेंड? या ब्रो. इंस्टा दे दो तेरा, मैं तुमको मैसेज करता. डॉकर सिंप्लीफाइज सॉफ्टवेयर डिलीवरी एंड improves scalability, making it easier to deploy and manage application in any environments. It is widely used in a DevOps and microservices architectures. या ब्रो, मैं वही कर रहा जो DevOps है क्या, वही कर रहा उसकी तैयारी. वो DevOps के अंदर आता, ठीक है. माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर और DevOps है ना, उसके अंदर ही डॉकर आ जाता. ठीक है, जो मैं स्टडी कर रहा ना उसका स्टडी. Secure your Docker container. How you can secure your Docker container? With the help of use a trusted based image. ट्रस्टेड बेस्ड इमेज हम यूज कर सकते हैं और डॉकर कंटेनर सिक्योर कर सकते हैं. और सेकंड है रेगुलरली अपलोडिंग डॉकर, अपडेटिंग रेगुलरली वी अपडेटिंग अ डॉकर, स्कैनिंग डॉकर इमेजेस फॉर ओके, डॉकर इमेजेस स्कैनिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टूल्स लाइक एज अ ट्रीवी, दैट इज ऑल्सो Prometheus and Grafana. We are used for monitoring the Docker image, not Docker container. We scanning the Docker image with the help of Docker Tree tools for the in scanning the image. I am 22 old. There is a scope from prompt engineer in yeah. Prompt engineer is a future of engineer, bro. या वो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी फिलहाल, तो आप कर सकते हो. बहुत डिमांड है एआई इंजीनियर की. मॉनिटरिंग, okay, using CI/CD, continuous integration and continuous delivery or deployment system, you create a Docker images container. Okay, yes, Jenkins job for triggering. First of pipelines होती है, तो हम पाइपलाइंस कैसे बिल्ड करते हैं? फर्स्ट जो होती है हमें पुल करते हैं. जब गिटहब से हम कोड ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है, ओके, पुल होता है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में जो सेकंड स्टेप में बिल्ड करते हैं, जो बिल्ड करने के लिए हम मैवन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, और उसके बाद बिल्ड होने के बाद हम नेक्स्ट जो थर्ड स्टेज है उसके अंदर हम कौन सा टेस्टिंग के लिए सोनार क्यूब टूल्स का यूज़ कर सकते हैं. और उसके बाद नेक्स्ट है जो डिप्लॉयमेंट के लिए हम कुबरनेटिस और डॉकर का यूज़ करते हैं. हम
उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं. It is better to do a government job, brother. It will be better for you. भाई मैं इसमें खुश हूँ भाई. और स्टडी कर लिया तो मैं जाऊंगा सीधा ऊपर. देर इज अ स्कोप फॉर प्रॉम्प्ट इंजीनियर. ओके, ये तो हो गया. कोणत्या वर्षाला आहे तू? 12th JEE ची तयारी करते. भाई जा पहिले JEE का पढ़. भाई फोकस कर JEE में तो ही IIT MIT में सिलेक्ट होगा. ओके ब्रो, ओके ब्रो, ओके ओके ओके. जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ. भाई हाउ डॉकर इज यूज्ड इन मत पढ़ AWS. IT JEE की मत कर. मस्त गवर्नमेंट सर्वेंट बन जा, जिंदगी सेटल हो जाएगी. इधर आ गया तो जिंदगी के लग जाएंगे तेरे. तो सिलेबस संपला है. सिलेबस कभी खत्म नहीं होता है भाई. आदमी खत्म हो जाएगा बट सिलेबस नहीं कभी खत्म होता है. जिंदगी भर चलता रहता है भाई. खाली ये मन का बेहाव है कि सिलेबस खत्म हो गया, अभी पढ़ाई हो गई. देख, अभी तेरा सिलेबस खत्म हो गया ना भाई. JEE होने के बाद तेरी क्रैक हो गई. समझ समझ ले, तेरी JEE क्रैक हो गई. तू फिर जाएगा IIT में. वहाँ पे भी तेरा सिलेबस खत्म नहीं होगा कभी. हाउ डॉकर इज यूज्ड इन AWS फारगेट ECS इलास्टिक कंटेनर सर्विस. कंटेनर जो कि हम क्या कर सकते, ECS इलास्टिक कंटेनर सर्विस यूज्ड अगेन क्रिएटिंग कंटेनर इन द इनसाइड AWS के अंदर इलास्टिक कंटेनर सर्विस है जिसका हम यूज़ करके हम कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ डॉकर. there are the sec first service inside the AWS, that's the ECS इलास्टिक कंटेनर सर्विस. इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं इनसाइड द AWS. मॉनिटरिंग डॉकर कंटेनर यूजिंग कमांड डॉकर स्टेटस. ओके, डॉकर स्टेटस तो मॉनिटरिंग कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, डॉकर कंटेनर विद the help of docker status commands. Integrating with monitoring and logging tools. Okay, Grafana, Prometheus and Grafana we are used for integrating monitoring and logging tools. Kubernetes also. Okay, use of Docker in our production environment. Small size of image, use monitoring, updating containers, scan container, implement network. नाडी कधी बी बाहेर राहू द्यायची. का बरं? कारण दिसते म्हणून. नाही, हा मग आतमध्ये टाकलं आणि त्याने फाशी घेतली मग. नाद ना. नाद 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 नाद. भाई तू PUBG खेळताय का? ID शेअर कर. नाही, फ्री फायर हा नाही खेळत. दुसरा एक पोरगा खेळतो. फंक्शन अल्जेब्रा स्टॅटिस्टिक प्रोबॅबिलिटी ऑल फिनिश. How was my look? कोण नाही बघत नाही तुला. बघत नाही गेलं ते ऑफलाईन. ते कधी iron? लाईक काही अलीकडे जास्त आहे ना त्यात लाईव्ह. मला माहिती आहे 13 जण लाईव्ह आलते. किती लोकांचं चॅनल झालंय सबस्क्राईबेशन? 253 253. भूषण पवार लाग. भूषण पवार रेडी टेबल 75,000 सबस्क्रायबर आहे कोणाची. माझे. हो खरं कुठे दाखव. माहित नाही तुला? दाखव ना. बॅन चॅनल 75K आली व्ह्यूज. त्याला पण टाका लागतं, नीट टाका लागतं माहिती आहे. 56 सबस्क्रायबर. कोऑर्डिनेशन कंपोनंट्स स्कूल बोर्ड ऑर्गनायझेशन केमिस्ट्री ऑल फिनिश. ओके, चल नाश्ता घ्या आता. पत्ता येतोय. कुठं नाही नाही रे. 10 रुपयाची नाथ ब्रह्म इडली का? 10 रुपये पोट भरून. हम खाना बना के खाएंगे भाई. मेरे को ही बना के खाएंगे खाना. ई कॉमर्स एक जो प्रोजेक्ट है ई कॉमर्स प्रोजेक्ट. निकल के सामने. ओ
Mm, you know about you know about cloud computing. No, no, अभी साला e-commerce project client. The client is nothing but the dyl.com, and crm is the applications complete 3.5 years to complete one project. Roles of your one senior DevOps engineer. Inside that we creating okay. Inside that there are 7 to 8 intern of DevOps, and client requirement budget. Okay, structure of our project. There are the 3 front end developer, 3 back end developer, 2 testers, 2 full stack developers, and 1 system engineer, 1 DevOps engineer. Inside the DevOps engineer, there are 7 to 8 intern DevOps engineer, and after that the project manager, 1 project manager. That is the structure of the project. Okay, SDLC software is how the SDLC work, the SDLC life cycle, software development life cycle. There are the multiple phases inside the inside the software development life cycle. It's working on the agile terminology, front end, back end, and databases. Okay, for the front end we are using React, and after that for the back end we are using the Spring Boot applications, and after the database, for the database servers we are used a PostgreSQL database. uh, Mole concept, redox reaction, chemical kinetic, chemistry solution, chemical laboratory. हो गया भाई, फिर JEE की पूरी तैयारी होगी तेरी. Jira. Jira tickets mainly used for okay, work in a tickets. Okay. There are the stand up meet, and after that the status meet, 15 minute of stand up meeting, and after that status meeting is a 1 hour status meeting. Design infrastructure. Okay, coding, Terraform we are using coding for the. Okay, Terraform. GitHub. The GitHub we are used a multi branching strategy inside a GitHub. There are the multiple different types of branches inside a Git branching strategy. First is nothing but a dev, second is the test, third is the unit user acceptance testing, after that prod, that is a production testing, and after that hot fix. Okay, that is a resolve issue and merge into the production branch. What is cloud computing? IIT NEET gift me. Cloud computing. What is cloud computing? Answer the questions. You are from Maharashtra.
Explain in short description. CRM team. There are 13 teams working in the company. Pipeline. There first stage is pull, second is build, third is the test, and last is the deploy. Webhook. When a developer push automatically build, okay, build for the build of that particular project, we are using Maven tools for building of that particular applications, and for the testing we are using SonarQube, and after for the deployment, deploy an application, so we are using Docker and Kubernetes for deploying an applications. Okay, so we are come towards the networking. First is nothing but the OSI model. Inside the OSI model, there are 7 layers inside the OSI model. First is nothing but the physical layers, data link layer, network layer, transport layer, session layer, and for that the presentation layer and application layer. Okay, there are 7 layers in OSI model. And TCP/IP model, there are the 4 layers in the TCP/IP model. First is application, transport, internet, and network access layer. Okay, transmission control protocol. TCP is nothing but TCP stand for the transmission control protocol. IP is in the internet protocol, and it is a set of rules. Protocol is nothing but it is a set of rules, and it decide how data transfer and receive between the server to network. Example: TCP, IP, STT, and HTTPS, and SMTP. Simple mail notification, simple mail transfer protocol. HTTP stand for the hypertext transfer protocol for the security purpose, and HTTP is nothing but the hypertext transfer protocol for the text data transferring from the source to destination. And TCP and IP is a transmission control protocol. IP is the internet protocol. Okay, firstly, TCP is firstly established connection between the sender and receiver, and then transferring data. And second point is that TCP operates on a transport layer in OSI model. In the OSI model, yeah, it's about AWS. It provides on-demand, scalable resource with the pay-as-you-go pricing model. जो हाँ इसका यूज़ कर सकते हैं AWS के अंदर, इसका यूज़ होता है, ठीक है. UDP is user datagram protocol. The UDP operates on a transport layer in OSI model. UDP, user defined protocol, user datagram protocol, mainly used for like as a transport layer in OSI model. It's operate transport layer in OSI model. It's established a connection sender and receiving. It's a connectionless protocol. UDP internet protocol. IP functions at a network layer. भाई सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो भाई. Internet protocols function at network layer in OSI model. Data transfer in packet format. That is internet protocol works on in network layer in OSI model. Okay. Data transfer inside the packet format. Assign IP address to the device. The mainly work of the IP internet अरे एक protocol. माणूस आहे तुझ्यात बघायला, पोरगी वरगी असल्यावर सांग नंबर पाठव. भूषण पवार तोंड बिंड सुद्धा ना माझ्या. I assign IP address to devices. That is the main work of the internet protocol. Ports. What is exactly ports? It is a communication endpoint of a particular services that's allowed to send and receive the data. There are different types of different type of ports. First is nothing but that is SSH, simple socket. Yes, shell.
HTTP is 80 port, HTTPS is a 443 port, MySQL is a 3306 port, SMTP that is 25 ports. Okay, subnetting. What is exactly subnetting? Suppose here one VPC, that is a virtual private network. Inside that we wants to virtually divide that particular network or private network into the subnet, that is called as a subnetting. Okay. Mm, we used CIDR, that is a continuous interdomain, yeah, continuous, okay, continuous CIDR for the dividing one particular network into the sub network. Routing is nothing but the it's a finding the shortest path from a source to destination. So in this way we are using routing. Okay, there are the multi types of the routing. Okay, what is the DNS? DNS is stand for the domain name system. That's user are for like assigning or map the IP address. Mainly DNS, how DNS work. DNS first here is one, suppose here is one user, and after that the user wants to request, wants to access any uh, applications or any service. Okay, so, this service will go to the request. Suppose you want to access a google.com, so we user access request to the google.com, and after that this request go to the mainly web server, and after that but web server don't know about what is a google.com. So this request go to the next, that is a DNS server. That is inside the DNS server. The DNS server know about the what is exactly google.com, and then he assigning the IP of that particular google.com domain name, and after that again send the request to the main web server, and after that this web server responds to the user. That is the work of the domain name system. Okay, and there are the different types of the records in the DNS. They are first in nothing but the A records, second is the 4A records, and after that the C name records and D name records. That is the work, that is the different types of the records inside the DNS. What is exactly virtual private network? Virtual private networks allow to connect securely connect to a remote server and performing an action. Okay, here one, suppose here one user, then VPN client, encrypted format data transferring from the client to the server, and after that get the response from the internet in a encrypted format. That's the main work of the virtual private network. Okay, and virtual private VPC, virtual private cloud. Okay, networking tools, there are multiple types of the networking tools. First is nothing but the ping, second is a check server is reachable or not. The mainly ping commands are used for the server is reachable or not. Net state hyphen a check port we are used or not. If config for checking the network IP address information. If config check the private IP of that particular system, so we are used if config. What is the difference between the private IP and public IP? What is the full form of NAT? Network Access Translation. What is a private IP and what is a public IP? The private IP is nothing but it is not accessible for a user, and public IP is nothing but it is accessible for a user. So private IP we are used for a secure our database, our application server. So in this case we are used the private IP, and public IP, the mainly public IP is used in any domains. Okay, like as facebook.com, google.com, that is called that is also the public IP. And that is but public IP when like our server is down, so in this case the
private public IP will be changed. So in this case we are used the elastic IP. The elastic IP is nothing but it is a static IP. It does not change. Okay. So we are using the public IP or elastic IP, that is called as a dynamic IP. What is a NAT? Network access translation, that is mainly used for network access translation, used for like the private IP or to public IP. That's some we want to some exchange information from the private IP to public IP and public IP to private IP. With the help of the router we can exchange information. Okay. That is a work of the network access translator. Ports is mainly used for like the ports is the communication endpoint, that is we are user. Baapre. जरा तस्वीर से दूर निकल के सामने. What is the load balancer? Difference between the application load balancer and network load balancer.
जरा तस्वीर से तू गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग Amazon AWS login. आज क्या लेंगे? आप जो बोले ओ skip for now. भाई मैं स्टडी अच्छा दिख रहा है क्या? वीडियो क्वालिटी अच्छी दिख रही है? ये देखो ये लेने वाला ये नोट्स निकाले नोट्स डॉकर की नोट्स डॉकर कुबरनेटिस जेंकिंस टेराफॉर्म एंसिबल गीट गिटहब multi-stage Docker build. Why we are using multi-stage Docker build? For a image. Why we are using Docker multi-stage? You know about that? What is a Docker Alpine? Docker Alpine. The Docker Alpine is a smallest image in a Docker file. JDK. Docker run mkdir run instructions, and after that the copy instruction, add instruction. What is the difference between add and copy instruction?
The and instruction are mainly used for we also copy the local to host, and after that also we are downloading some we want to download some external file from the browser. So in this case we are used add instruction inside the docker file, and after that the copy instruction used for is the copy the local machine to the container. That's why we are used the copy instruction inside that. And after work dir, actually work dir instruction mainly used for we want to some create we want to we want to performing any action inside the docker. So we defining the directory inside the container. We work on inside that particular directory. So in this case we are user work dir instruction. Okay, from mainly used for creating a okay we assigning the operating system and its versions, and that's why we are used from instruction. After run we are used, we want to run any commands inside a docker file. So in this case we are used a run instruction. Okay, maven is mainly used for a building building the build our okay project pipelines. Docker integrations. What is Docker? What is the difference between the virtual machines and containers? Stop image container unused network. How do we remove it? So we are using Docker image. Docker image prone. Docker volume also. Different resources we want to stop or unused network resources we want to remove. So in this case we are using docker image, okay, or docker volume and prone commands for the remove unused or stop the container. In a docker you need to persistently store data. Okay, so we are using docker volume for the limit of container in a docker. How many limit of container in a docker? Here there has no limits for a running container inside the docker. It depends on a machine system. In our system is not enough CPU memory. At that time we are not used or run container, creating a number of container in one node, but that container has a different CPU memory. So how you handle this? So we are pass the argument when we creating a container. So the arguments are like as a hyphen CPU. How many we want a CPU? Like a hyphen CPU. There are two. I want two CPUs and hyphen memory. There 1 gigabyte memory we want, and after that when we passing that particular argument, and then we run the container. We create a container. So in this case we are used we handle that particular situations. Okay, what is a docker file? Okay, what is a docker instructions? What is the purpose of cmd? What different from cmd, difference from the cmd and entry point, and also the copy and add. What is the main difference between that particular two instructions? How scale container in horizontally, how we can scale that particular instance, okay, horizontally. So we running multiple container horizontally using the docker swarm or kubernetes. Okay, the docker swarm we are used to run a container horizontally. Different docker containers. Okay, what is the difference between docker container and kubernetes pod? What is the main use of docker container and difference of between difference between the docker container and kubernetes pod? The mainly docker container, okay, inside a pod we create a docker, one or more docker container we can create. Okay, docker container is a critical failing without any errors. Docker container is a critical failing without any errors.
faster build image and smaller image size. For the faster build image, we used okay. वाजलं आई शपथ. GCP, Google Cloud Provider. Okay, and there are GCP services. First, the compute services. What are the compute services in GCP? The first is a Google Cloud Compute, Google Compute Engine, that is based on infrastructure as a code, and second is a Google Kubernetes Engine, that is Google Kubernetes engine. Inside that, we creating a Kubernetes cluster by using a Google Kubernetes engine services. And third is nothing but the apps engine, that is as a platform as a service. And fourth is a cloud function, that is a serverless computing. Second service is storage service. Inside the storage service, we use there are different storage services inside the Google Cloud platform. First is nothing but Google Cloud Storage, store and retrieve the data, and after that the persistence disk. Second storage service is a persistence disk, that is a block storage used okay inside that particular services. Third is the file store. Inside that, we can store the files, folders and others storage inside that file store. Then create a resource group. Okay, then the compute service. Hmm. Inside the Azure service. How to define driver in Docker network. So we are passed the argument hyphen hyphen driver driver. Inside the Docker, we define the driver. So we are use hyphen hyphen driver argument for the memory hyphen hyphen memory user inside a gigabyte. Like I want 1 gigabyte, and after that, that is the we want to pass the argument of CPU. So in this case, we are used a hyphen hyphen CPU. How many CPU you want? Like 3, 4, 5 CPUs. Okay. This type of argument. Environment variable. For the environment variable, we are pass the hyphen e argument for the using CI/CD, continuous integration, continuous delivery system. You create a Docker images for container. Okay, yes. Jenkins jobs triggering create a Docker image automated deployment using Kubernetes. Bind volume in this new container.
you have a container and you want to update your container without losing data, what would you do? First, backup of your container, stop container, pull a new image, start new container, bind the volume in this new container. फर्स्ट जो हम क्या करेंगे, बैकअप लेंगे कंटेनर का, उसके बाद उस कंटेनर को स्टॉप करेंगे, उस कंटेनर को डिलीट करेंगे, न्यू इमेज बनाएंगे, उस न्यू इमेज से न्यू कंटेनर बनाएंगे, उसके बाद उसको कंटेनर को स्टार्ट करेंगे। उस कंटेनर स्टार्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम हमने बैकअप लिया था उसका हम उसको जो न्यू कंटेनर उसको अटैच कर देंगे। So in this case we will handle this particular situation. You have a container, you want to update your container without losing data. Without losing data of that particular container, we can update that particular container. Secure your Docker container. How you can secure your data Docker container? Use a trusted based image. Trusted based image यूज करनी है हमको। रेगुलरली अपडेटिंग डॉकर, रेगुलरली डॉकर अपडेट रखना है। स्कैनिंग डॉकर इमेज फॉर वल्नरेबिलिटीज। ओके, टूल्स लाइक द डॉकर कम टूल्स यूज करके हमें स्कैनिंग करना है डॉकर इमेज को। ट्रेवी टूल्स का यूज करके हमें डॉकर इमेज को स्कैन करना है। Monitoring, using CI/CD system, you create a Docker images container. Yes, Jenkins jobs triggering, create a Docker image, automated deployment using Kubernetes. How Docker is used in AWS? Use of Docker in a production environment. A small size of image, use a monitoring, updating container, scan container, implement a network backups container. Docker with a Terraform. Okay, monitoring Docker container using a command Docker status, integrating with monitoring and logging tools, Prometheus and Grafana. Okay, Kubernetes also. How Docker is used in AWS? Okay, AWS Fargate, Elastic Kubernetes Service, that is ECS. We are used for the creating. तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा।
अबे साला